Hmm, here with us. The third, I guess it is one, two, three, four, fifth, sixth question. What we are going to do. The sixth question state for every year and every quarter, find the unique customer and total order from orders table. So we need to uh, come up with the unique customer and a total order for every year and every quarter. अच्छा, so it is for a quarter also. Let's see if I'm able to answer जहाँ तक मेरा perception जाता है. So select the year, distinct customers, sum of orders as how to find a quarter. क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है like make sure to show the quarter as Q1, Q2, etc. And also it has stated like we need to find every year and every quarter. So I think here I am wrong somewhere or other. Let's check out the Quarters, find the unique customer and total order from order tables. Make sure to show the quarter as a quarter one, quarter two, etc. Okay. Which table we want? Order table. Okay. So we need a quarter. So we will get it from the order date quarters, right? So I will write a select. Now we need a quarter order date, right? As a quarter. That's what we want, right? So for that, I can use a concatenate. Oh, sorry, concat. In Excel, that's a concatenate. Quarter is a quarter. See, this is the aggregate function. All right. So we are using an aggregate function. Is the quarter? It's not a column name. It's an aggregate function because I want from order date as a quarter. Okay. Okay. As a, you can write quarter. Then the second column year. We will extract from the order date. Okay. As a year. We will use here again the count function. In the count function, we need a distinct value of customer number. The what they said, unique customer. Unique customer. Then I will write count star. Count star we write use to calculate everything. Okay. I already cover everything, guys. Please follow the previous video also, that it would be easier you to understand. Okay. Group by years. Without group by, you cannot use any aggregate function. Order by year and what else? Quarters. That's it. The oh, something wrong. Why it's giving me? Okay, okay. I forgot to give a comma. Okay. So this is what we want. Quarter one, quarter two, quarter three. Okay. So let's move on to the. So this is the answer जो सर ने निकाल के दिया, बट मेरा आंसर इज कम्प्लीटली डिफरेंट. हम लोग चेक करते हैं. सबसे पहली बात कि उन्होंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, ये उन्होंने किया, ठीक है, जिससे उन्हें पता चला कि क्या है. फिर उसके बाद उन्होंने सेलेक्ट किया क्वार्टर, सेलेक्ट कॉन्केट किया उन्होंने ऑर्डर को क्यू, क्वार्टर एक एग्रीगेट फंक्शन है, ऑर्डर डेट से हमने कॉन्कैटिनेट किया एज
फिर ईयर हमने लिया, ऑर्डर डेट से हम लोग लेंगे ईयर, और इससे ईयर की तरह लेंगे। फिर नेक्स्ट हमने काउंट लिया ऑफ डिस्टिंक्ट, क्योंकि यूनिक पूछा गया था। डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी, आई मीन नंबर, एज यूनिक कस्टमर्स फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। ठीक है। फिर क्योंकि हमें ईच करके फाउंड करना है, सो वी आर टेकिंग फ्रॉम, सॉरी, वी आर डूइंग ग्रुप बाय ईयर एंड क्वार्टर, और फिर हमने ग्रुप बाय ईयर किया, फिर हमने ऑर्डर बाय ईयर किया, और क्वार्टर। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस इज एरर व्हाट वी वर डूइंग। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स किए, उससे फिर हमें पता चल गया कि एग्जैक्टली क्वेरी क्या है। फिर हमने कॉन्कैटिनेट किया, उसको नाम हमने क्यू दिया, क्वार्टर लिया, ऑर्डर डेट से उसको क्वार्टर की तरह नेम किया, ऑर्डर ईयर को लिया, ऑर्डर डेट से उसे ईयर नेम किया, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम किया एज अ यूनिक कस्टमर फ्रॉम ऑर्डर्स, ग्रुपिंग इट बाय यू ईयर एंड देन quarter, and ordering it by the year and quarter. That's it. This was in question, and this came with an answer. Thank you so much, sir. And again, I would say कि मेरी प्रैक्टिस इस हिसाब से चल रही है, so trying my best.